Good morning, students. Today I'm going to discuss equation of tangent and the equation of normal to the curve. The formula of equation of tangent is y minus y1 is equal to mt into x minus x1, and equation of normal is y minus y1 is equal to mn into x minus x1. Here x1 and y1 are the x1 and y1 is the point, and mt is the slope of tangent and mn is the slope of normal. I have already discussed with you how to find slope of tangent and the slope of normal. My first question is, find the equation of the tangent and the normal to the parabola y square is equal to 4ax at the point 80 square and 280. To find the equation of the tangent or the normal, first of all I have to find out the slope of tangent and the slope of normal. So first of all, equation of parabola is 80 square, parabola is y square is equal to 4ax. So to find the equation of tangent, there is a requirement of slope of tangent. So to find out the slope of tangent, I have to differentiate with respect to x. So y square's derivative will be 2y dy by dx, and 4 is a constant, x derivative is 1. So I am left with 4a. So dy by dx will be equal to 4a upon 2y. 2 and 2 cancel out, we are left with 2a over y. So slope of tangent तब तक नहीं complete होती जब तक points fill ना किया जाए. So slope of tangent at point, given point is 80 square and 280, is dy by dx, that is noted by mt, is equal to 2a upon, here is only y and the y's value is 280. Cancel out, we are left with only 1 by t, that is the slope of the tangent. We also have to find out the equation of normal. So let's find out also slope of normal. Slope of normal is equal to noted by mn, and it is minus 1 upon slope of tangent, that is minus 1 over mt, which is minus 1 upon 1 by t, which is t only, right? So let's say now write down equation of tangent is, equation of tangent क्या थी, y minus y1 is equal to mt into x minus x1. Here x1 y1 is that given point and mt is this. So we get y minus, the value y1 is 280 given point, and mt is 1 by t into x minus x1 is 80 square. Let's solve these. We get, let's cross multiply, ty minus 2at square is equal to x minus 80 square. So shifting x or shifting y to the right hand side, we are left with x minus ty minus at square plus 2at square is equal to 0. I have shifted ty, that is a positive sign, to the right hand side, minus 280 to the right hand side, make it positive, and equal to 0. We get x minus ty plus at square is equal to 0. That is the equation of tangent. And what about equation of normal? Equation of normal will be y minus y1 is equal to mn into x minus x1. So it is y minus, the value y1 is again 280, mn is t into x minus x1 is 80 square. So it is y minus 280 multiplied tx minus at cube. Shift y to the right hand side, shift that thing to the right hand side. So we are left with tx minus y minus at cube plus 2at is equal to 0. तो 0 को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ. तो that is my equation of normal. तो basically हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मली के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए होता है.
और दूसरा स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए होती है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एंड दैट एग्जांपल इज we have to find out equation of tangent and the normal, that's the same thing, to the curve. Now curve's equation is x is equal to a sine cube t and y is equal to b cos cube t. So it is a parametric equation, right? And we have to find out the equation of tangent. Equation of tangent के लिए point चाहिए, ये points ही हो गए. अब slope of tangent चाहिए. So for that I will differentiate both with respect to t. तो x derivative will be dx by dt. Here t sine cube derivative with 3 sine square t into derivative sine t is cos t. So this is 3a sine square t cos t. No need to simplify. On the other side, I will again differentiate. We get b into 3 cos square t into derivative cos t is minus sine t. So that is minus 3b cos square t sin t. So dy by dx basically हमें चाहिए होता है dy by dx. So that is dy by dt upon dx by dt. So dy by dt is minus 3b cos square t sin t upon 3a sin square t cos t. 3 cancel out. One sin cancel out. One cos and one cos cancel out. So we are left with only minus b upon a cos t over sin t. And what is cos t by sin t? That is cot t. So that is the value of dy by dx. I think यहाँ तक क्लियर हो गया आपको. So slope of the tangent क्या हुआ? Slope of tangent क्या होता है? Slope of tangent dy by dx ही होता है. At point t is, तो ये सारा वैल्यू t की फॉर्म में ही है, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a इंटू कॉट टी. तो दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. लेट्स से दिस इज डिनोटेड बाय एम टी. नाउ इक्वेशन के लिए पॉइंट भी चाहिए, एंड पॉइंट है मेरा, ये मेरे पास पॉइंट ही है. पॉइंट इज x1 एंड y1. तो x1 y1 विल बी माइन a sin क्यूब t एंड b cos क्यूब t. ये मेरा पॉइंट ही है क्योंकि कर्व निकालना है एट एनी पॉइंट t. सो इक्वेशन विल बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू एम टी इंटू एक्स माइनस x1. सो y माइनस सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यूज. y माइनस y1 इज b cos क्यूब t. एम टी इज माइनस b अपॉन, that is mt is dy by dx which is minus b upon a cot cube t. Cot t. It can also be written as cos t by sin t into x minus the x1 a sin cube t. Right? So this is basically my equation of tangent. क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं cot can be written as cos over sin, और उसके बाद इसको शिफ्ट कर देते हैं. cos cube t is equal to minus b. This is cos t upon a sin t, cot cos by sin into x minus a sin cube t. Just cross multiply and we get an answer. A sin t into y minus b cos cube t is equal to minus b cos t into x minus a sin cube t. Multiply a sin t y minus ab sin t cos cube t. On the right hand side we get minus b cos t into x minus plus ab cos t sin cube t. अब x और y कंबाइन कर दे. दिस इज द टर्म ऑफ x, दैट इज द टर्म ऑफ y. इसको शिफ्ट कर रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड पे. वी गेट b cos t x प्लस a sin t y इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट कर दो राइट साइड पे, ab cos t sin cube t and this is ab sin t cos cube t, and that is the equation of tangent. Similarly we can find out the equation of normal. For that I have to find out slope of normal. Slope of normal is denoted by mt, that is equal to minus 1 over
t, and mt is minus b upon a cos t by sin t. So this is minus 1 upon minus b cos t upon a sin t. इसको प्रॉपरली लिख दूँ तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, a sin t अपॉन b cos t. तो डेट इज़ द स्लोप ऑफ नॉर्मल. सो इक्वेशन क्या बनेगी? सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बी बिल्कुल सेम. नॉर्मल विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू mn इंटू x माइनस x1. बिल्कुल सेम प्रोसीजर यूज़ करना है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. सो y माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू y1, so that is y1. Same point, x1 y1, it is b cos cube t is equal to mn is a sin t upon b cos t into x minus x1 is a sin cube t. Just cross multiply b cos t into y minus b cos cube t is equal to a sin tx minus a is a into a square sin raised to power 4t. I have just multiplied these. A sin tx minus a square sin raised to power 4t. Similarly we get b cos ty minus b square cos raised to power 4t is equal to a sin tx minus a square sin raised to power 4t. So that is the equation of tangent. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. आप एक स्टेप और कर सकते हो कि x और y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दो और कांस्टेंट को राइट साइड पे कर दो, तो यू विल गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑल्सो. सो लेट्स कम विद अनदर एग्जांपल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन, बेसिकली इट इज कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस, which is parallel to the line this. So for that I have to find out the slope of this line. So let the point of contact of the required tangent line is x1 y1. Let the point of contact of line is यहाँ पे लिख रहे हैं कॉन्टैक्ट ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन इज x1 y1. तो x1 y1 एक पॉइंट ले लिया है जहाँ पे वो टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है. सो इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7. सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. We get dy by dx is equal to, it is 2x square, it is 4x plus 0, that is 4x. So at point x1 y1, so I will get slope of tangent, right? That will become slope of tangent. So dy by dx will be equal to 4x1. Now since the tangent of the line this which is parallel to the line this, अगर ये उसके पैरेलल है तो अगर ये पैरेलल है तो स्लोप इस वाली लाइन की और दूसरी वाली लाइन की सेम होएगी. तो आई विल राइट, सो इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन is 4x minus y plus 3 is equal to 0. So differentiate with respect to x, we get 4 minus dy by dx is equal to 0. So dy by dx will be equal to 4. Since both are parallel, according to that, slope of the tangent which is parallel to the line this, so that slope will also be equal to that. So according to statement, 4x1 will be equal to 4, so x1 will be equal to 1. So that is the value of x1. Now to find the point y1, since point x1 y1 lie on the curve that is this
given y is equal to 2x square plus 7. So that equation will become y1 is equal to 2x1 square plus 7. If I put x1 is equal to 1, I will get y1 is equal to 2 into 1 square plus 7, which is 2 plus 7, that is equal to 9. So y1 is equal to 9. तो my point will be, point होता है x1 y1, that will become 1,9. तो ये point आ गया. तो point मेरे पास आ गया. Slope of tangent पहले निकालनी है नंबर फर्स्ट से. Then equation of tangent will be y minus y1 is equal to mt into x minus x1. So y minus y1 is 9, mt is, so अभी मैंने mt भी कंप्लीट नहीं निकाला. mt था मेरे पास 4x1, राइट. अब ये जो पॉइंट है 1 and 9, अगर मैं इसके अंदर फिल कर दूं तो mt विल बी 4 into 1 विच इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि y तो इसके अंदर है ही नहीं. तो वी गेट 4 into x minus the value of x1 is 1. तो y minus 9 is equal to 4x minus 4. तो my required answer will be 4x minus y minus 9 plus 4x minus y minus 4 plus 9 is equal to 0. That is 4x minus y plus 5 is equal to 0. That is the equation of tangent. My next question is most probably same. Find the equation of all the lines with slope minus 1. Here slope is given. And that the tangent to the curve this. Tangent to the curve this. Last में क्या था? Tangent is parallel to the line. Here tangent with the slope minus 1. So slope is already given to us minus 1. So what I am going to do? First of all, equation of, देखो, we have to find out equation of find the equation of all the line with the slope. मतलब equation of tangent हमें find out करनी है. तो equation of tangent के लिए क्या चाहिए? एक point और दूसरा slope. Slope है, points are missing. तो point निकालने के लिए first of all I have to differentiate the equation of the curve. Differentiate with respect to x. तो dy by dx, तो 1 over x minus 1, इससे डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 over x minus 1 का होल स्क्वायर. आई थिंक सभी को डेरिवेटिव आता है. लेट्स से दिस इज फर्स्ट. सिंस अब पॉइंट है नहीं तो पॉइंट मेरे को खुद लेना पड़ेगा. लेट द पॉइंट इज x1 y1. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी dy by dx at point this will be 1 over x1 minus 1 का whole square. Let's say this is first term. Note that. Since slope is minus 1 is equal to that, so I will write, so according to statement mt is equal to minus 1. So minus 1 or x minus 1, x1 minus 1 whole square will be equal to minus 1. Minus minus cancel out. So x1 minus 1 का whole square that will be equal to 1 implies, तो नो x1 minus 1 क्या होगा? ये स्क्वायर उस तरफ जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा विथ प्लस माइनस साइन विच इज़ प्लस माइनस 1. सो डैट इज x1 minus 1 will be equal to 1 and x1 minus 1 will be equal to minus 1. मतलब एक प्लस की वैल्यू लगा दी एक माइनस की. तो x1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1. तो x1 की वैल्यू आ गई 2 और दूसरी साइड से आ गया x1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, x1 आ गया 0. तो मेरे पास दो पॉइंट्स आ गए. अब ये दोनों पॉइंट को फिल करना है कहीं पे. नाउ सिंस कर्व सिंस द पॉइंट x1 y1 lie on the curve, since point x1 y1 lie on the curve, कर्व क्या थी? y1 डेट इज़ y इज़ इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1. तो इसको सेटिस्फाई करवाएगी. तो y1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर x1 माइनस 1. तो सबसे पहले इफ़ आई पुट x1 इज इक्वल टू 2 4, तो आई विल गेट द वैल्यू y1 1 ओवर 2 माइनस 1 विच इज़ 1 ओवर 1. तो पॉइंट विल बी 2, 1. On the other hand,
If I fill x1 is equal to 0, तो y1 will become 1 over 0 minus 1 which is minus 1. तो point will be 0 and minus 1. अब मेरे पास 2 पॉइंट आ गए with single slope minus 1. तो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. तो equation of tangent will be y minus y1 is equal to mt into x minus x1. So y minus y1 is 1, m slope is given to us minus 1 into x minus x1 is 2. अब सिर्फ इसको रीअरेंज करें तो we get this. And the second way where point is 0 and minus 1, so equation of tangent will be again same, y minus y1 is equal to m into x minus x1. So we get y minus, point is 0 and minus 1, y1 is minus 1, mt is minus 1, x minus 0. On rearranging we get this, x plus y plus 1 is equal to 0. So that is the equation of tangent. You can check and you can solve it.